My dear students and friends, so welcome to our RSV physics class. So this is lecture 2 on oscillation, simple harmonic motion for your class 11 and NEET and JEE. This is basically theory class, and after that there is a problem set for your practice for your NEET, JEE and IIT's examination. Okay, so let us discuss for the first lecture I have discussed on simple harmonic oscillation, SHM. Okay, now simplest example of simple harmonic motion is the simple pendulum that हमने झूला के बारे में बताया था ना. So that will be describing. This is the simple. So simple pendulum, what it is? This is, so there is a bob. So this is bob, this is small mass, है ना? Bob, this is a small mass. एंड दिस इज एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. बहुत मतलब वो एक्सटेंस नहीं किया जाता, मतलब ऐसा, मतलब ये स्ट्रिंग है जिसको आप एक्सपांड नहीं कर सकते, ऐसा स्ट्रिंग है ना. सो आप इसको यहाँ से इसको ये किए, तो आप नाउ यू हैव पुट हियर एंड देन जस्ट लीव इट एंड देन इट विल ऑसिलेट दिस टाइप्स ऑफ मोशन. सो जस्ट लाइक योर जो है इन प्ले ग्राउंड ऑफ व्हेन योर मदर आपको जो है ना झूला रहे थे ना, दिस टाइप्स ऑफ एग्जांपल. सो यू हैव ऑलरेडी सीन, है ना. ओके, सो नाउ आई विल बी एनालिसिस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम. ओके, नाउ so this is a simplest expression why this is your mass mg, it is working here, है ना. So now, so this also there is the component of, this is mg sin theta and there will be this will be a mg cos theta. So mg sin theta will be the restoring force. So mg sin theta will be the restoring force for simpler. So that restoring force we can write F equal to m into a equal to this. So a equal to जो है g sin theta. ओके, है ना, mm कट गया, है ना. सो a equal to g sin theta, a equal to omega. Now if you this angular distance, if this is o and this is b and this is c, है ना. So this is angular maximum amplitude is maximum amplitude is this is amplitude OB equal to OC and this will be your theta. ये थीटा हमने ये किया था ना, this is theta, है ना. So ये theta now, अच्छा this angle is the theta. Okay, so now oh sorry this will be theta, है ना. This is the tangential and this is the vertical, this will be theta. Okay, so this is sin theta. Okay, now the small जो है ये एम्पलीट्यूड फॉर स्मॉल एंगल. सो आप बहुत ज्यादा एंगल के लिए ये एम्पलीट्यूड जो है this approximation is not valid. When theta is less than 4 degree, then you can consider it just this is a linear. Okay, so when angle is very much small, then you can consider it as a linear. So in that case, this is if your length of the bob, length of the string is L, and if your this much length is x, so in that type we can write is what we can write, x equal to L into theta. So theta equal to x over L. Okay, so now for small angle approximation or theta less than 4 degree, you can write sin theta of the order of sin theta equal to theta. Why this is, that I will be explaining. Okay,
सो नाउ ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जो है ये था आपका ना जी थीटा, थीटा इज इक्वल टू यर एक्स बाई एल, है ना। सो ओमेगा इक्वल टू जो है आपका रूट ओवर ऑफ जी बाई एल, है ना। सो टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल ऑसिलेशन इज 2 पाई ओवर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी. So this time period has established. Okay. So time period equal to 2 pi root over of L over G. So this is the famous equation. From this equation you have a practical for your class 11 to determine the acceleration due to gravity. कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? So यहाँ से आप कैसे acceleration due to gravity कैसे कैलकुलेट करेंगे? So now, so this is so T equal to G equal to what it is जो है हाँ यहाँ से आपको जो है टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी इंटू एल. सो इफ यू प्लॉट t square versus L, then this is a constant, so this there will be a straight line. T square means if you changing your length, मतलब एक मिनट for your second जो है पेंडुलम सेकेंड ऑर्डर, मतलब सेकेंड पेंडुलम मीन्स मतलब जिसका टाइम पीरियड इज हियर t इक्वल टू ट्वाइस सेकेंड, है ना। सो यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद और यहाँ आने के बाद आपको दो सेकेंड लगते हैं ना। तो समहाउ जो है आपका इस टाइप में इसका जो अगर लेंथ चेंज कर देंगे, लेंथ चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका, सो आपका जो है टाइम पीरियड उसमें क्या होगा आप देख लीजिए एक बार। लेंथ चेंज, तो लेंथ के साथ साथ आपका जो है टाइम पीरियड का जो है ये आपका जो है लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेंथ कम करेंगे तो टाइम। फ्रॉम द स्लोप यू विल गेट what is the slope 4 pi square over g. So from the slope you can get g equal to 9.8 meter per second square in इक्वेटर. सो इन इंडिया इज लगभग आपका जो इक्वेटर का आपका जो है आसपास है ना। तो इसमें जो है तो कलकत्ता कितना है बताइए, 22 डिग्री ना, 22.3. सो नाउ आपका जो है इसका जो है जी का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। आपको जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का, अच्छा यहाँ पे जो एप्रोक्सीमेशन हमने बताया था ना उसका बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है आपको जो है इसका एप्लीकेशन बता देंगे। सो टोटल एनर्जी कितना था, एनर्जी इक्वल टू जो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर. सो व्हाट इज द ओमेगा, जो ओमेगा इक्वल टू जो है जी ओवर एल, है ना। यहाँ से ओमेगा था टू, ओमेगा इक्वल टू व्हाट था जी ओवर एल. सो दिस इज इक्वल टू हाफ एम जो है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी ओवर एल इंटू स्क्वायर, जी ओवर एल इंटू स्क्वायर. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, So this जो है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, it will be varies if you go to the north pole and south pole because it acceleration due to gravity changes, है ना. So कैसे टाइम पीरियड चेंज हो रहे हैं, so टाइम पीरियड इक्वल टू कैसा था, टाइम पीरियड इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट ओवर ऑफ एल ओवर जी, है ना. सो टी ओवर टी प्राइम मतलब दूसरी जगह में, मतलब दिस इज वन प्लेस, दिस इज 2 नंबर प्लेस, दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी प्राइम ओवर जी, है ना. सो ये टाइम पीरियड आपका जो है चेंज होगा किस तरह से रिलेशनशिप में है, तो ये है ना. सो दिस द रिलेशनशिप आप जो है इन ग्रेविटी जो है आई विल बी टॉकिंग इन जो है ग्रेविटेशन जो है ना. सो ग्रेविटेशन फील्ड ऑल्सो, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों चेंज होता है, सो बिकॉज ऑफ जो है
अर्थ का जो है, जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो अर्थ का रोटेशनल स्पीड कम होती है, तो एसिलेशन जो है आपका वहाँ पे जो है वेट कम हो जाता है, वेट कम होता है, इसका मीन्स जो है आपका जो है, तो ये जो डिफरेंट जो है आपका पोजीशन पे आप, ये था ना आपका जी ओवर जी प्राइम जो है ना, तो आप हाइट के साथ साथ भी चेंज होता है, हाइट के साथ साथ कैसे कैसे चेंज होता है ना, आर प्लस एच ओवर आर, है ना। सो जो एच हाइट पे है ना, एच हाइट मतलब ये आपका अर्थ सरफेस, दिस इज योर अर्थ सरफेस, इट इज हाइट एच, है ना। सो यहां से जो है आप ये दिस इज योर लेंथ आर, सो इस तरीके से जो चेंज होता है इसमें भी, है ना। सो दिस इज जो आप वहां पे जैसे हम पढ़ाएंगे जी एम ओवर आर स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू mg r square, so g proportional for r square, so this is equal to square. Okay, so there is a approximation of sin theta of the order of theta when theta less than 4 degree. ये हमने बताया था ना कैसे ऐसा कैसे होता है ना। सो इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है आपका, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में आपका जो है e टू द पावर x यू कैन राइट एज e टू द पावर x समेशन, दिस इज ए इन्फिनिट सी, किसी भी टर्म, ये जो टर्म को जो है आप इन्फिनिट सीरीज की टर्म इसमें लिख सकते हो। सो x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल x इक्वल टू 0 टू जो है इंफिनिटी, या सो हियर यू कैन राइट, सो हाउ मच इट इज, तो बेसिकली जो है आपका एक्चुअली 0 मीन्स जो है 1 प्लस जो है x, है ना। सो एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, है ना। से नाउ इफ ए प्लूट e टू द पावर जो है आई थीटा, सो दिस इज क्या होगा आपका 1 प्लस आई थीटा, प्लस की जगह में माइनस होगा, है ना, थीटा स्क्वायर बाई ट्वाइस फैक्टोरियल, है ना, है ना, ये आई आई रूट आई इज आई इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1, है ना, प्लस जो है आपका यहाँ पे क्या होगा फिर स्क्वायर क्यूब, है ना, ये भी एक माइनस आएगा, माइनस आई जो है थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, उसके बाद जो है आई प्लस होगा थीटा टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, है ना, उसके बाद जो है उसके बाद क्या होगा आपका प्लस आई इंटू जो है थीटा 5 बाई 5 फैक्टोरियल, है ना, इस टाइप में जो है आपका। नाउ e टू द पावर आई साइन थीटा यू कैन राइट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये थोड़ा ऊंचा क्लास में आप सीखोगे। सो इसमें यहाँ पे जो है e टू द पावर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जैसे इक्वल टू दिस मच। सो cos थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू जो है ये टर्म जो है आपका क्या होगा थीटा, है ना, थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, उसके बाद थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से जो है इंफिनिटी। और cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से, है ना, इंफिनिटी। सो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू जो व्हेन थीटा इज वेरी मच स्मॉल, क्यू 5 दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड, देन जो है साइन थीटा ऑफ द ऑर्डर ऑफ थीटा लिख सकते हो, और कॉस थीटा का जो है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो, है ना। तो इतना तो आप ले सकते हो, है ना, और यहाँ से फिर थीटा ये लिख सकते हो।
सो ये दिस एक्सप्लेनेशन, ये मैथमेटिक्स जो है आपका थोड़ा सा हायर क्लास, इट विल बी इन हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स. So here complex analysis and everything, then time you will be class your for your graduation classes you will be learning from this Taylor series expansion and this equation. So why sin theta equal to theta, that I have explained. Okay, अभी जो डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग. So this types of problem will be coming in your exam, different types of competitive exams, है ना. So in brief, in during problem discussion period, I will be discussing different types of problem. Here I am giving 2 or 3 example. Just this is your spring. Here mass is attached, and here this is horizontal direction. Here mass is attached, and one another system there is a spring and another spring is there. There is a rigid wall, है ना. So ये mass m, सभी का spring constant is k. Okay. So for horizontal motion let's discuss. So here restoring force is equal to minus kx, है ना. तो दिस इज बेसिकली जो है रेस्टोरिंग फोर्स जो है कि ये इधर होगा आपका, आप जो थोड़ा सा खींचोगे. सो एफ इक्वल टू सर ओ एम जो है, दिस इज एफ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जो है माइनस के एक्स, है ना. ओमेगा इक्वल टू हाँ दिस इज एक्सेलरेशन, है ना. सो एम इक्वल टू एम ए इज एक्सेलरेशन, है ना. A and F and A is here. So compare with this equation. So A is minus k by m into x, है ना. So k by m equal to omega square. So omega equal to root over of m by k. So time period of this oscillation will be 2 pi root over of 2 pi by omega. So this is equal to 2 pi root over of m by, so omega equal to root over of k by m, na. Sorry, this is root over of k by m. Okay, if compare this equation, f equal to minus kx, so a equal to acceleration equal to k over m. Okay, so is compare with equation जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर से, so omega equal to k by m, omega equal to root over of k by m, and time period equal to 2 pi by omega. So this is equal to 2 pi root over of m by k. Okay, similarly for vertical, है ना. So this will be, there will be kx, है ना, minus kx. Similarly जो है time period equal to 2 pi root over of m by k, and this k sometime you can also explain just spring constant. Here this is force required for unit length, है ना. जो है यूनिट लेंथ के लिए आपको कितना जो है आपका जो है पर यूनिट लेंथ जो इसमें जो है ना ये m, दिस इज योर mg, है ना. अब इसका और लेंथ, दिस इज तो नॉर्मल स्प्रिंग, अब इसका थोड़ा सा लेंथ मान लीजिए आपका ये थोड़ा सा बढ़ गया, है ना. दिस इज योर लेंथ ड्यू टू हैंगिंग ए मास mg, है ना. सो k विल बी mg over l. So time period t equal to root over of twice by root over of l over g. This l is not like length of this total string. This is the impar जो है is a length increase due to attached मतलब hanging a mass of mg, है ना. So this is another difference. So now let's attack the problem number 3. Here this is the residual, and there is a mass spring constant of this, and this is the spring constant of this. So now if you just stretch मतलब just if you pull the mass you during this direction मतलब in this direction, then what will happen when it is so F equal to restoring force or due to this while will be this to this spring 1 will be minus kx. Okay,
but in the meantime this spring will, it is compressed. Again this will give kx this direction. Understand? When you pull this direction, so just you then you just leave it. So when you pull this direction, so restoring force will be due to this spring is minus kx, but this spring will be compressed, है ना? This is compressed. So again minus kx will give in this direction. Okay. So F equal to minus twice kx, है ना? A equal to minus twice k over m into x, and compare with equation A equal to minus omega square x, omega equal to जो है twice k over m, so time period equal to twice pi root over of m over twice k. So in that case this was time period was t equal to twice pi root over of m by k, and here this is root over of m by twice k. Okay, so this is the difference. See the difference. So different spring assembly will be there and something, so you have to analysis carefully for your for calculating time period, है ना? Okay, of oscillations. So these types of problem will be important. Okay, I will be discussion on natural vibration, damped vibration, and forced vibration. So what is natural vibration? When there is no other force except restoring force, है ना? So restoring force is there due to it is oscillating, but when there is no other force, मतलब कोई डैम्प कर रहे हैं या जबरदस्ती एक फोर्स वाइब्रेशन दे रहे हैं, so that type of forces are not available. So just आपका जो है आपका F equal to minus kx, जैसे this is in just like your spring, है ना? So spring, this is your kx, है ना? So in that case, so you just pull it, and this vibration is when the force, this is your applied force, and this is the restoring force, and oscillation is just in this direction. So this is longitudinal मतलब longitudinal vibration. So natural vibration, this is natural vibration, है ना? Natural vibration एक नंबर जो है 1 number is the longitudinal vibration. Now second जो है there is a wire, है ना? जैसे गिटार, वायलिन, इस टाइप का. So you just pluck or struck it, है ना? मतलब आप वहां से इसको खींच रहे हो. So in that case vibration will be this types, okay, है ना? This will be vibration ना? This vibration, so force and जो है आपका जो है इसका जो है object जो है आपका this direction, but vibration is along ऑब्जेक्ट का लेंथ कौन सी डायरेक्शन पे, दिस डायरेक्शन, एंड वाइब्रेशन इज अलोंग जो है इसका ट्रांसवर्स. सो दिस इज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन. सो इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज इन दिस डायरेक्शन बट वाइब्रेशन इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज ट्रांसवर्स vibration. So there is two types of natural vibration, longitudinal and transverse. Okay, so this is natural vibration. Now nothing is natural vibration, there is always damped vibration. So आप जैसे ये एग्जांपल दिए थे ना, आपका यहाँ पे झूला झूल रहे हो ना, so झूला you just pull it maximum amplitude, but when you are you are doing nothing, so again it will slowly it is decreasing. So why it is? Due to viscous air drag, है ना? Air resistance is there ना, so air drag और viscosity, है ना? So ये air viscosity जो इसके बाद viscosity जब पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना? So ये air की वजह से ये धीरे धीरे स्लो हो जाता है ना? ऐसा है ना? So the force जो है FD damped, this is proportional to velocity. मतलब आप कितना मूव, जितना जोर से घूमोगे उतना आपका जो है उसको रेसिस्ट करेगा. सो एफ डी इक्वल टू जो है आपका क्या होगा, ये
जो है b v is basically dx dt, so b dx dt है ना. So now this term is fd है ना. So b dx dt. Okay, so is m d2x dt2 जो है k इक्वल टू m जो है ओमेगा स्क्वायर x माइनस b dx dt. So you can write d2x dt2 जो है m सब ये जो ये हो जाएगा है ना. तो m जो है यहाँ पे जो है प्लस b बाई m d2 dx dt plus omega square x equal to 0. So this is second order differential equation. So when you will be able to solve it, then this is the life will be simple है ना. थोड़ा सा आप क्लास 12 में थोड़ा सा बाद में आप सीखोगे. But those who are already known about it, this is for recap for of them. So एक solution is a e to the power minus b by m t जो है sin और cos जो है ओमेगा टी प्लस जो है फाइव कांस्टेंट. सो दिस इज द सॉल्यूशन है ना ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन. ओके, सो बी बाई एम है ना. सो इन दैट केस व्हेन बी बाई एम जो है आपका बी बाई एम मतलब यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स विल बी व्हेन बी बाई एम इज टेंस टू 0 देन मतलब बी बाई एम बहुत स्मॉल है. टेंस टू 0 मतलब मीन्स यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 1 ये 0, सो ई टू द पावर दिस इज 1, सो दिस विल बी x इक्वल टू a sin omega t plus 5. So this is the natural oscillation. So this is the simple जो natural oscillation जहाँ पर when there is a no damping force. So now so x equal to a sin omega t you know na. So now here I'll be putting so this is the oscillation. Okay, so x equal to this is this one, and here this is natural oscillation है ना, when there is no damping force. So natural oscillation. For damping case amplitude a, but it is decreasing with time. This is the time equation. This is time and this is the amplitude x. And if this is maximum amplitude है ना. So if this is your x and this is your t and here the case is damped, what will be here? So again you have to draw it here. Again this amplitude will be less है ना. यहाँ का जो है एम्पलीट्यूड धीरे धीरे यहाँ पे जैसे ये कम हो जाएगा, जैसे ये मतलब यहाँ जो है एम्पलीट्यूड धीरे धीरे एंड दिस एम्पलीट्यूड विल बी slowly die out. See the difference. Here amplitude is almost constant. This is a, and here this is a, but this amplitude is gradually die out. So धीरे धीरे ये स्टॉप हो रहे. सो दिस इज नेचुरल एंड दिस इज जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल. ऑल ऑसिलेशन देयर इज नो natural oscillation when it will oscillate infinite time, but due to difference of viscous drag or air drag है ना, so due to this oscillation will be damped. So this is the equation of damped equation, and it's the graphical representation. Okay, we have discussed damped oscillation. So this is the equation d2x d2 b d by m,
and the solution is a b by m sin जो है b to the power minus b by m t. So where omega is k by m minus of this b square by 4b. So in that case this portion you have seen na k by m, but for damped oscillation there is a minus b square by 4m square also. Okay, so now we will be discussing on forced vibration. So what is forced vibration? So basically example, so this is your table and you putting a tuning fork in your lab. You will be given a tuning fork when यहाँ पर आपका wooden bar will be there. You heat it and then you press it here. So when you when you put it on the table, then you will be seeing both vibration, है ना, मतलब एक बहुत जोर से आवाज आ रही है. मीन्स आपका जैसे है आपका दिस एवरी सिस्टम एंड एवरी इट्स ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी. जब आपका दिस टेबल हैज ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आपका टेबल का एक वाइब्रेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी होते हैं. व्हेन दिस जो है आपका दिस इज योर एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, है ना. सो इफ यू एंड दिस इज योर ड्राइविंग फोर्स, है ना, driving force. So just see, when driving force frequency and natural frequency is matching, driving force frequency and natural forces frequency is matching, then there is a growth of amplitude. So this is the driving force frequency omega d. This is omega d, this frequency of this tuning fork, है ना, tuning fork. And this is the frequency, normal frequency of जो है ये आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टेबल, है ना. सो ओमेगा डी के साथ जब इसका ओमेगा मैचिंग होता है, सो देयर इज ए ग्रोथ इन एम्पलीट्यूड. व्हाई दिस इज सो? सो दैट्स व्हाई सम एग्जांपल यू हैव सीन योर चाइल्ड लेक्चर्स, जैसे क्लास 10 में, है ना. सो डोंट गो बाय मार्च ऑन दिस ब्रिज. ब्रिज में आप मार्च करके आपको जैसे पैरेड में वो जाना नहीं, क्योंकि when your bridge has a natural frequency and you people are just एक साथ में जैसे आप दे रहे हो ना, so there is a natural frequency, मतलब this is forced vibration. आप वहां पे एक vibration दे रहे हो. So in that time, so this is your bridge and you are going here, okay ना. सभी लोग एक साथ मार्च कर रहे हो, एक साथ जब ये forced vibration, मतलब ये आप एक वाइब्रेशन एंड ब्रिज हैज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना, ये इसका फ्रीक्वेंसी. सो एंड दिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड ब्रिज नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज मैच्ड, देन एम्पलीट्यूड विल बी ग्रो एंड देन इट में मतलब इतना एम्पलीट्यूड जितना ग्रो होगा, सो दैट टाइम ब्रिज में क्रैक और समथिंग. So this is the forced vibration, and sometime you have seen जैसे it's playing guitar and guitar box, sitar, violin, this types of balls is casing under wooden box. Why it is so? So wire is a natural frequency and जो है आपका this is your driving force, आप बाहर से दे रहे हो, and wooden box has a natural frequency. So wooden box का जो frequency just like your table. So wooden box का जो frequency and your जो है driving force is matching, then that time sound will be larger. जैसे इन रेडियो, है ना, आप बचपन से आप देखे हो. So आप यहाँ पे आपको एक स्केल दिया गया ना, so 104.3 मेगाहर्ट्ज में आपको ट्यून करना है एफएम, है ना. So आपको मान लीजिए, so इस फ्रीक्वेंसी में मैच करना, मतलब there is a सम फ्रीक्वेंसी. सो आप इसका जो है एक सर्किट बोर्ड है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है. आप ये फ्रीक्वेंसी, आपका जो फ्रीक्वेंसी बाहर से जिस एफएम जिस फ्रीक्वेंसी में सेट है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ आपका जो है ये इसका जो रेडियो का जो नॉब आप घुमा रहे हो ना, सो दैट टाइम यू चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडियोज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब ड्राइव जो आपका ड्राइविंग, और वहां से आपका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेडियो का फ्रीक्वेंसी मैच होता है, तो इन दैट फ्रीक्वेंसी यू आर, मतलब that time you will be seeing there is a lots of songs and everything. So this is the basic example of जो है forced vibration and जो है आपका, है ना. So now let's have an analysis. So practical example I have given. So let's have an analysis of this vibration. Okay. So and that time, so let's this is the equation d2x dt2 plus b by m natural, और ये है this is damped condition is also, plus omega square x
इक्वल टू नॉट जीरो, दिस इज द नेचुरल, मतलब जहां पे आपका डैम्प नहीं है, एंड ये डैम्प जो जुड़ गया, एंड देन देयर इज ए फोर्स्ड वाइब्रेशन, दिस इज F0 sin ओमेगा टी टी। ओमेगा डी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है ड्राइविंग फोर्स, मतलब बाहर से जो दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। इन दैट केस आपको ये इन दैट केस द सॉल्यूशन विल बी ए एक्स टी इक्वल टू ए sin omega dt, where a equal to f0 over omega minus omega d square plus 4b square omega d square. So after giving this oscillation, so झूला का केस में जैसे है ना, आप यहाँ से बाहर से आप oscillation दे रहे हो, so it has a natural frequency. When you are giving another force, that time it will oscillate in its forced oscillation of frequency of forced force. मतलब आप जिस तरीके से फोर्स दे रहे हो, जिस ऑसिलेशन में फोर्स दे रहे हो, जिस फ्रीक्वेंसी में दे रहे हो, that oscillation it is just so in that case natural frequency will be a sin omega t, है ना. So here the solution is a sin omega dt. So natural frequency of this oscillation is died out and it is taking the frequency from forced oscillation. Forced oscillation का जो frequency यहाँ से आप frequency ले रहे, and that frequency it is starting, जैसे आप FM का वो घुमा दिया, जैसे 98.3 FM पे मेगाहर्ट्ज पे आप लगाया, है ना, वहां पे उस फ्रीक्वेंसी में वो ऑसिलेशन करना वहां पे चालू हो जाएगा, है ना. So this is the example of forced oscillation and everything. So now, so you all of you should prefer to like hear sound, है ना, vibrations and musical songs. So what is the basic difference between जो है musical and noise? So music, what is the basic difference between music and noise? So music is a regular periodic vibration, है ना, जिसमें आपको अच्छा लगेगा सुनने में, रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन, बट नॉइज इज नो पीरियोडिक वाइब्रेशन. नाउ लेट्स डिस्कस विथ टोन. टोन इज जस्ट contain single frequency, means let it is 100 hertz, एक ही फ्रीक्वेंसी. और जो है आपका नोट मीन्स मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, है ना. अब जो है आपका लेट गिवन एग्जांपल, एक म्यूजिकल सॉन्ग कंटेन 100, 200, 250, 300, 400, है ना, 500, 600, है ना. So different types of frequencies there. So in which what is the fundamental frequency? So lowest frequency is called, this is fundamental frequency, and rest जो frequency is called overtone. बाकी जो फ्रीक्वेंसी सबको ओवरटोन बोलता है ना. नाउ सो बेसिकली व्हाट विल बी द हार्मोनिक्स? हार्मोनिक्स विल बी, दिस इज द फंडामेंटल इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. So what will be the harmonics? 400, 600 hertz, है ना. So this is the basic term of music, different types of musical noise something, है ना, musical sound and musical frequency. ठीक है, ये चैप्टर जो है ऑसिलेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, ये चैप्टर इज कंप्लीटेड इन 2 लेक्चर्स.
पढ़ते रहिए. नेक्स्ट विल बी योर प्रॉब्लम सेट डिस्कशन. थैंक यू.